Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Swedeep Academy. Today we continue with our journey through the first chapter of class 10th, that is development. So far we have discussed how to compare different countries or states. Till now we have focused on two important indicators, that is total income and per capita income. And these are commonly used especially from a general public's perspective because they are very simple and easy to understand, you know that. But the question is here, but are these two enough to judge a country's development or we need some more? Well, in today's session we are going to explore income and other criteria that give a clear and more complete picture of development. So stay tuned, take notes, and let's dive deeper into what really makes a country developed. So in last class we have discussed what do you mean by total income, that is the total income of all the residents of the country. This gives us the total income of the country and what are the limitations with it. And major limitation कौन थिला? That is, now since countries have different population, comparing total income will not tell us what the average person is likely to earn, and that's why we are telling that total income is not such an useful measure. And आमे use करिवा start कले per capita income. Okay. So total income discuss कले, then total income रा limitation, and because of the problem with total income, we are telling that comparatively per capita income is the useful measure. Okay, just like that in today's session we will discuss what are the limitations with average income, what are the limitations with per capita income. कौन per capita income ही सबुठो best method ना per capita income रो भी किछि issues अछि. Okay, so let's see. While averages or per capita income are useful for comparison, they also hide disparity. This is the big limitation of per capita income. Okay, it is a important criterion for development, but ये disparities को hide करे. केमिति, how or why? Let's see. While average income is useful for comparison, it doesn't tell us how this income is distributed among the people. आकु हमें कहूचे it hide disparities. गोटे एग्जांपल नेबा टेबल नंबर 1 पॉइंट and we will try to understand कि गोटे कंट्री रो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को केमिति पर कैपिटा इनकम शो करि पारे नाही. As you can see here, country A and this is country V, and in column 1, 2, 3, 4, 5 suppose धन्य country A रे 5 जन citizen रहउचंती and country B रे भी 5 जन citizen रहउचंती and country A रो citizen number 1 को monthly income होचे 9,500 and 2 10,500, just like 3, 4 and 5. And what is the total income of the country A? Country A रो total income केते? That is around 50,000. And what is the average income? Now 50,000 divided by 5, that is 10,000. So this is the average income. Okay, if we talk about country B, same. First person is earning 500, second 5, third 5, fourth 5, and total fifth 48,000, and total income is 50,000. Per capita income is 50,000 divided by 5, that is 10,000. Now you tell me which country is more developed. आमे एठे केमिति कंपेयर करिवा जे कंट्री ए की कंट्री बी की अधिका डेवलप. जदि मु क्वेश्चन पचारि व्हिच वन इज मोर डेवलप, obviously पिला माने आंसर करबे दैट इज कंट्री ए. व्हाई कंट्री ए? ना इफ यू टॉक अबाउट द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्री ए, इनकम सिटीजन्स मानक भितर केमिति डिस्ट्रीब्यूट हेछि जदि आमे कहिबा कंट्री ए रे, देन कंपैरेटिवली कंट्री बी अपेक्षा आमे कहि परिबा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलमोस्ट इक्वल. कंट्री ए रे सब सिटीजन हाराहारी गोटे समान लाइफस्टाइल एंजॉय करूचंती. अल्ट्रा रिच अल्ट्रा पोर लाइक सिचुएशन कंट्री ए रे नाही. बट इफ यू टॉक अबाउट कंट्री बी,
then some are ultra poor and some are ultra rich. So that is called disparities. That's why we are calling per capita income hide disparities. This do not show income, how income is distributed among the people. So this is the limitation of per capita income. जमती मु कहली टोटाल इनकम रो लिमिटेशन जोगु, टोटाल इनकम रो प्रोब्लेम जोगु आमे पर कैपिटा इनकम को प्रिफर कले एंड आमे कहले जे पर कैपिटा इनकम इज बेटर देन टोटाल इनकम. जस्ट लाइक दैट बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम आमे कहि परिबा जे आउट हाउ किछि बेटर इंडिकेटर और आउट हाउ किछि बेटर मेजर असी की अकॉर्डिंग टू व्हिच कि आमे डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करि परिबा. ओके, सो आई होप लिमिटेशन बुझि पारथिबे. जिबा आगु धीरे धीरे जिबा whether there is other methods or not. So let's see some questions. First question is, why do you think average income is an important criterion for development? Okay, first question जे आमे काहे के average income को गोटे important criterion बोली आमे ग्रहण करछे. मु ऑलरेडी कहि सारलिनी because of the problem with ना total income. Total income रे जो problem थिला एवरेज इनकम आमको कौन हेल्प कर ना एवरेज इनकम आमको हेल्प कर जेहेतु कंट्रीज मानकर पॉपुलेशन डिफरेंट टोटल इनकम को नहीं कंपेयर करिबा गोटे बेटर हेबो नाही. दैट्स व्हाई जदि आमे एवरेज पर्सन बा सॉरी एवरेज इनकम ऑफ द पर्सन को जदि आमे कंसीडर करिबा ताला आमे कहि परिबा टोटल इनकम अपेक्षा आम पाखे गोटे बेटर पिक्चर रहिबो जे को कंट्री केते डेवलप. दैट्स व्हाई आमे कहि परिबा जे एवरेज इनकम इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट क्राइटेरियन फॉर डेवलपमेंट. ओके, सेकंड क्वेश्चन दैट इज बिसाइड्स साइज ऑफ पर कैपिटा इनकम व्हाट अदर प्रॉपर्टी ऑफ इनकम इज इंपोर्टेंट इन कंपेयरिंग टू और मोर सोसाइटीज. ऑलरेडी आमे एटी डिस्कस कले कौन ना बिसाइड साइज ऑफ पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम को बाद दे आउ को प्रॉपर्टी इनकम रो प्रॉपर्टी से पूछा व्हाट अदर प्रॉपर्टी ऑफ इनकम इज इंपोर्टेंट टू कंपेयरिंग टू एंड मोर सोसाइटीज. व्हाट अदर प्रॉपर्टी ऑफ इनकम पिला इठे आंसर लिखि दियंती जे सर दैट इज हेल्थ स्टेटस देन दैट इज नेक्स्ट इज एजुकेशन स्टेटस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. दीज आर द अदर एस्पेक्ट्स जहाँ नहीं आम सोसाइटीज को कंपेयर करने कथा. ये आंसर लिखि दिखते बट से आंसर टी करेक्ट हेनी कहीं क्वेश्चन पचार व्हाट अदर प्रॉपर्टी ऑफ इनकम, इनकम रो को अदर प्रॉपर्टी जमी आम टोटाल इनकम सह आम पर कैपिटा इनकम को कंसीडर कले तो से इनकम रो को प्रॉपर्टी को आम कंसीडर करने कथा. द राइट आंसर विल बी दैट इज द हाउ इक्वली और अनइक्वली द इनकम इज शेयर अमंग द पीपल. व्हाट अदर प्रॉपर्टी ना वी शुड बिसाइड्स द साइज ऑफ पर कैपिटा इनकम the distribution of income is also very important. पर कैपिटा इनकम जानिबा सह आमे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को भी आमे अधिका से प्रॉपर्टी को आमे अधिका प्रायोरिटी देबा कथा बिकॉज इट टेल्स अस हाउ इक्वली और हाउ अनइक्वली द इनकम इज शेयर अमंग द पीपल इन ए सोसाइटी. सो दैट इज द other property of income which is important for comparing two or more societies. I think a question टी बुझी पारथिबे. पर कैपिटा इनकम सह आमे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और हाउ इक्वली और अनइक्वली द इनकम इज शेयर अमंग द पीपल ये भी जानवा दरकार टू गेट ए क्लियर पिक्चर अबाउट डेवलपमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री. नेक्स्ट, सपोज records show that average income in a country has been increasing over a period of time. Suppose record कहूँ जे average income गोटे country रा continuously increase करूँ. So from this data can we conclude that all sections of the economy have become better. ए डाटा रो हमें कहि परिबा कि जे जेहेतु गोटे कंट्री रो एवरेज इनकम बढ़ुची कौन एवरेज इनकम बढ़ुची बोली इकोनॉमी रो प्रत्येक सेक्शन रो सबु लोकंकर डेवलपमेंट होची हम एही बोली कहि परिबा कि. The right answer will be no. No, we cannot conclude that all the sections of the economy have become better because of the average income is increasing. Why? Answer is why. First thing, ना it hide disparities. गोटे तो आम ऑलरेडी पढ़ सारे जे कहीं एवरेज इनकम बढ़ुले ये एवरेज इनकम बढ़ुची एवरेज इनकम कंट्री बी ए सह सामान हेले कौन हम किसी सिटीजन तो अल्ट्रा पुअर. तो फास्ट आंसर तो हो दैट इज ये रिफ्लेक्ट करूनी जे इनकम कोभली डिस्ट्रीब्यूट होती अमंग द पीपल. दैट्स व्हाई ऑल द सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी बेटर ऑफ होती आम कहीपर ना. दिस इज वन आंसर वन एस्पेक्ट. Second, also we can say average income does not reflect
अदर इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एटा आम अदर एस्पेक्ट्स को ऐड कर दे पारिबा जोटा कि मुझे कही सेकेंड क्वेश्चन आम ऐड कर पारिबानी थर्ड क्वेश्चन आम लिखि पारिबा दैट इज एवरेज इनकम डज नॉट रिफ्लेक्ट अदर इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स वी कैन से हेल्थ सिचुएशन कौन then education situation con infrastructure employment opportunities okay electricity road clean drinking water so these are the other multidimensional is सब जिनस को you know that development is multidimensional तो ये मल्टी डायमेंशन को कंसीडर कले ही आम कहीपर जे को कंट्री केते बेटर सो ओनली इंक्रीज इन एवरेज इनकम ओके डू नॉट इंडिकेट ये इंडिकेट डू नॉट इंडिकेट्स कि गोटे कंट्री रो ऑल सेक्शंस गोटे इकोनॉमी रो ऑल सेक्शंस बेटर ऑफ होचंती सो आई होप कि यू अंडरस्टूड एठो हमें कौन बुझी पाले ना हमें बुझिले पर कैपिटा इनकम सह हमें यह भी बुझिले जे पर कैपिटा इनकम इज नॉट ए गुड इट इज ऑल्सो नॉट ए गुड मेजर टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज पर कैपिटा इनकम सह आमको अदर क्राइटेरियास अदर फैक्टर्स अदर सेक्टर्स को भी आमको कंसीडर करिवार अछि टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज ओके ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट टेबल नंबर 1 टेबल नंबर 1.3 को हम डिस्कस करबा सेथि पई ही बुक रे दिटा एग्जांपल दिया जाय ओके नाउ लेट्स सी व्हाट डज दिस टेबल शोस इफ यू लुक एट द टेबल नंबर 1.3 दैट इज स्टेट ऑफ हरियाणा पर कैपिटा इनकम इज approximately 1,80,000 स्टेट ऑफ केरला per capita income approximately 1,63,000 if you talk about Bihar per capita income approximately 34,000 okay it means table number 1.3 per capita income को जदि आमे consider करिबा we can say सबटु developed state होची हरियाणा and सबटु poor state होची बिहार but now let's look at table number 1.4 जदि आमे per capita income को बाद दे जदि आमे consider करिबा that is infant mortality rate if you consider literacy rate at and net attendance ratio okay what is the net attendance ratio now it is the total number of children of age group 14 to 15 attending school as a percentage of total number of children of the same age group okay I mean different age group पाई I mean net attendance ratio काढी परिबा suppose I mean 14 to 15 years of age group पिलांकर net attendance ratio total number of children से same group रो केते student बा केते children रेगुलरली स्कूल अटेंड करते दैट इज द नेट अटेंडेंस रेशियो एंड नेट अटेंडेंस रेशियो आमको कौन प्रोवाइड करिवो ना हेल्थ स्टेटस लिटरेसी रेट आमको कौन प्रोवाइड करिवो हेल्थ स्टेटस एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट आमको प्रोवाइड करिवो एजुकेशन स्टेटस सो लेट्स सी इफ वी लुक एट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट आमे कहि परिबा हरियाणा रे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 30 केरला रे 10 एंड बिहार रे 35 बाय लुकिंग एट दिस डाटा वी कैन से हेल्थ फैसिलिटी is far better in Kerala. Why? Na because infant mortality rate is very low. प्रति 1000 पिछा मात्र 10 जन शिशु मृत्युवरण करछन. But if you look at Haryana, that is too high, 30. In Bihar, too high, 35. Just like that, if you look at the literacy rate, in Kerala 94, in Haryana 82, and in Bihar too low, that is 62. Just like that, attendance ratio in Kerala 83. But if you look at Haryana and Bihar, that is too poor, less than 50, 43 in Bihar. So now tell me, if we consider other criteria like health, like education, okay, जेतेबेला ए सब को आमे कंसीडर करूचे देखो डेवलपमेंट रो पिक्चर केते चेंज हेउची by looking at now table number 1.4 आमे केबे एहा कहि परिबानी जे हरियाणा होची गुडा डेवलप स्टेट now I will tell कि केरला इज अधिका डेवलप केरला बहुत अधिका डेवलप as compared to हरियाणा एंड बिहार सो डेवलपमेंट इट हमें कौन बुझिले डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट इनकम ओके फर्स्ट क्लास रे ही मु जेतेबेले डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ मु जेतेबेले कहितली मु बुझैतली डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल इट इज नॉट जस्ट अबाउट इनकम इट इंक्लूड्स हेल्थ एजुकेशन इक्वालिटी क्वालिटी ऑफ लाइफ so average income helps compare but other criteria like literacy and life expectancy show the real progress आमे जदि केवल इनकम बा एवरेज इनकम को नेबा आमे ग्रोथ जानि परिबा बट जदि आमे ट्रू प्रोग्रेस रियल प्रोग्रेस ट्रू डेवलपमेंट जानिया पे चाहूचे देन अदर क्राइटेरिया लाइक हेल्थ एजुकेशन इक्वालिटी क्वालिटी ऑफ लाइफ आ ऊपर हमको फोकस देबार अछि that is the main idea behind this table number 1.3 and table number 1.4 so I hope अपन बुझी पार्थिबे income and other criteria so while income is a useful measure
real development should include both economic growth and improvement in quality of life. Already मु development definition रे भी कही development definition कौन? It is a all round development. Economic growth सहित improvement in quality of life is called as real development, or you can say the development. Okay, so from table number 1.4 and table number 1.3, now it is concluded that कि public facilities आम पई केते आवश्यक. What do you mean by public facilities? ना health, education facility, quality of life, electricity, road, transportation, everything. ए सबु आसे हमर public facilities रे. Facilities which are provided by the government. पूर्व डाटा रु आम जो देखिले that is table number 1.4 and table number 1.3, केरला रे infant mortality rate कहीं एते कम ना because of the good public services regarding health. केरला रे literacy rate एते high कहीं ना because public services regarding education is very good in Kerala. So how is that the average person in Haryana has more income than the average person in Kerala but lags behind in these crucial areas? I think यहाँ बुझी पड़ती हरियाणा रे मनानु एवरेज पर्सन का एवरेज इनकम ऑफ द पर्सन बहुत हाई बट लैक्स इन मेनी क्रूशियल एरियाज लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन. ओके, सो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट मनी इन आवर पॉकेट कैनॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लाइव वेल. जदि आमर इनकम बहुत बढ़ी जाउछि आर अर्थ यह नुह जे आमे गोटे बेटर लाइफ बंचिया पई ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को आमे परचेस कर दे परिबा. सपोज गोटे एग्जांपल नबा दैट इज योर मनी कैनॉट बाय ए पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. ओके, इट कैनॉट एंश्योर अनएडल्टरेटेड मेडिसिन unless you can afford to shift to a community that already has these things. Obviously आमे जदि गोटे सेही भली कम्युनिटी गोटे सेही भली समाज रे आमे बंचुने जोटे कि बेटर एनवायरनमेंट थिबो. ओके, लोक मानकर मोराल सेति की बा एथिक्स सेति की बेटर थिबो सो दैट अनएडल्टरेटेड मेडिसिन्स आमे पाई परथुबा. जदि लोक सेति की अवेयर नथिबे लोक सेति की एजुकेटेड नथिबे आमे ए सब जिंस विथ मनी आमे परचेस करि परिबा नाही. Money may not also be able to protect you from the infectious diseases unless the whole community take preventive steps. जेतेबेले पूरा whole community भी किछि preventive steps न होनी तो कोनोसी गोटे महामारी भली डिजीज को भी आमे कंट्रोल करि परिबा नाही. तो ए सब एग्जांपल बा अनदर एग्जांपल also is there in your book. आउरी भी किछि आमे एग्जांपल नै परिबा दैट इज बेले बेले किछि किछि डिमांड्स बा किछि किछि हमरो नीड थाए आवश्यकता थाए जाकी इंडिविजुअली विथ मनी वी कैन पाए. आमे हम पाखरे टंका छिली ताको हम परचेस करि परिबा नाही. गोटे क्राइम फ्री एनवायरनमेंट हम परचेस करि परिबा नाही. इट इज नॉट पॉसिबल. किछि किछि एभली फैसिलिटीज अछि जो फैसिलिटीज गुड़िक विथ कोऑपरेशन ऑफ कम्युनिटी बा हमें कहि परिबा गवर्नमेंट बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करिवार अछि. अदरवाइज वी कैन अफोर्ड दैट. इंफ्रास्ट्रक्चर कहि परिबा लाइक रोड ट्रांसपोर्ट एंड व्हाट एवर. ओके, ड्रेनेज एंड ब्ला 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 बाय सब एग्जांपल भी नहीं परिबा. ए सब एग्जांपल में यह कहि परिबा पब्लिक फैसिलिटीज आर वेरी इंपोर्टेंट. फैसिलिटीज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. जदि गवर्नमेंट मेजर रोल प्ले करूनी जदि गवर्नमेंट आमको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट अनएडल्टरेटेड मेडिसिन ओके गोटे बेटर कम्युनिटी ओके बा आमको डिफरेंट इन्फेक्टियस डिजीजेस रु आमको प्रोटेक्ट करू ना गवर्नमेंट जदि किसी रोल नौनी. ओके, थिंक अबाउट द कोरोना रे गवर्नमेंट रो कौन रोल थिला. विदाउट द रोल ऑफ गवर्नमेंट कम्युनिटी रो संपूर्ण सपोर्ट रे आमे कौन कोरोना को कंट्रोल करि पारथांते. ऑब्वियसली नो. So public facilities are very very important. So from this part you can understand what do you mean by public facilities and what is the importance of it. Facilities which are provided by the government is called as public facility and kahin ki important आपन माने बुझी पारथिबे. बेस्ट एग्जांपल आमे टेबल नंबर 1.3 1.4 नियो हरियाणा को केरला को कंपेयर करो and from that we can conclude it. Okay, Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facilities. Similarly, in some states, PDS public distribution system functions so well that the health and nutrition status of those states is certainly like to be better. PDS किछि स्टेट रे बहुत बढ़िया किछि किछि स्टेट रे
इनफैंट मोर्टालिटी रेट बहुत लो कहीं ना से स्टेट्स मानक हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज बहुत बेटर एंड हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज को बेटर ऑफ करने प्राइवेट प्लेयर्स नुह गवर्नमेंट को मेजर रोल प्ले करार अच्छे बिकज ऑलवेज मोटिव बिहाइंड और प्राइवेट प्लेयर्स आर गाइडेड बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट से मेन एम हूँ प्रॉफिट अर्न करवा सोसाइटी वेलफेयर नुह तो सोसाइटी वेलफेयर जब आम चाहूँचे सोसाइटी को जब आम गोटे बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ तापाई चाहूँचे देन गवर्नमेंट हैज टू प्ले द रोल सो दैट्स व्हाई पब्लिक फैसिलिटीज आर इंपोर्टेंट सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक सो टिल नाउ आम बुझीगले जे टोटल इनकम इज ए मेजर टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज टोटल इनकम अपेक्षा बेटर दैट इज पर कैपिटा इनकम बट पर कैपिटा इनकम ओनली आमको गोटे प्रॉपर पिक्चर दौना डेवलपमेंट विथ पर कैपिटा इनकम आमको अदर क्राइटेरियाज को भी आमको कंसीडर करिवार अच्छे टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज सो नाउ द क्वेश्चन इज हियर आम डिस्कस करथिले दैट इज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट व्हिच इज प्रिपेयर बाय वर्ल्ड बैंक जमते वर्ल्ड बैंक प्रिपेयर करथला वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड यू नो दैट क्राइटेरिया यूज होतला दैट इज द पर कैपिटा इनकम को यूज करी वर्ल्ड बैंक प्रिपेयर करथला वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट नाउ द क्वेश्चन इज हियर विथ पर कैपिटा इनकम अदर सोशल इंडिकेटर्स को यूज करी कौन किसी रिपोर्ट वर्ल्ड लेवल रे प्रिपेयर करा जाए कि कौन सी रिपोर्ट पब्लिश हुए कि द आंसर इज यस एंड दैट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ओके रिमेंबर स्टूडेंट्स नॉट ओनली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट नाउडेज बहुत गुड़ाए अदर रिपोर्ट अच्छी ओके दैट इज नाउ ग्लोबल जेंडर पैरिटी बा आम कहीपर हैप्पीनेस इंडेक्स क्राइम इंडेक्स डेमोक्रेटिक इंडेक्स नाउडेज बहुत गुड़ाए अदर मेजर्स अच्छी जहाँ को नहीं आम डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करूँ नॉट ओनली पर कैपिटा इनकम एंड टोटल इनकम बट अकॉर्डिंग टू योर बुक को जब आम कंसीडर करवा देयर इज ए रिपोर्ट दैट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन हायर क्लास यू विल रीड मोर मेजर्स डिफरेंट इंडिकेटर्स आर देयर टू कंपेयर कंट्रीज बट एबे आम डिस्कस करवा पर कैपिटा इनकम सह आमे जदि अदर सोशल इंडिकेटर्स को इंक्लूड करी कौन सी रिपोर्ट वर्ल्ड लेवल रे जी कि हमको क्लियर पिक्चर दौचे रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री देन दैट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सो व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द मीनिंग now it is a report okay it is a report that ranks country okay that ranks countries okay based on the overall well-being of their people not just the income okay again I'm telling you what do you mean by human development report it is a report that ranks countries ये कि countries मानों को rank करे on the overall well-being of the people लोक मानकर overall well-being को नहीं countries मानों को rank करे not just on the basis of income and this human development report is prepared by UNDP United Nations Development Program United Nations Development Program you can see okay headquarter New York then what are the different criteria just like World Bank per capita income use करथला जदि आम कहबा वर्ल्ड डेवलपमेंट सॉरी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन कौन क्राइटेरिया यूज हुए ना मोस्टली दे आर कंसीडरिंग इनकम okay they are considering one is standard of living then second one is that is education and third one is health okay these three criteria are used by UNDP to prepare human development report कौन criteria use हुए ना लोगों का standard of living education and health ओके ये तीनटा क्राइटेरिया को यूज करे यूएनडीपी प्रिपेयर करे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड टू नो अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल यूएनडीपी यूज पर कैपिटा इनकम एंड टू नो द एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द कंट्री इट यूज मीन्स year of schooling and to know the health status of a country it use life expectancy at birth again I am telling you कौन criteria use हुए ना standard of living education and health एक criteria को नहीं human development report prepare करा जाए and to know about the standard of living gross national income per capita को use करा जाए and to know the education status mean years of schooling and to know the health status life expectancy ये सब को यूज करा जाए to compare different countries and as you can see okay India's जदि rank कथा में कहिबा then now according to latest data this is the data of 2018
तो 2024 लाटेस्ट डाटा जदि कहबी इंडिया रैंक होची दैट इज 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज ओके एंड को कैटेगरी को इंडिया बिलोंग्स करे ना इंडिया इज बिलोंग्स टू मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी ओके मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी को इंडिया बिलोंग्स करे सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट नाउ this is the last part of our discussion that is sustainable development you know that what do you mean by sustainable development means development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs so sustainable development are two aspects achi one that is present generation ko ame डिमांड को फुलफिल करिबा नीड को फुलफिल करिबा विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर ओके विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर मीन्स फ्यूचर जनरेशन पई आमे रिसोर्स कंजर्व करिबा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रे कहा जाउची फ्यूचर जनरेशन पई रिसोर्स कंजर्व करिबा एंड फ्यूचर जनरेशन पई रिसोर्स कंजर्व करिबा सहित प्रेजेंट जनरेशन रो नीड को भी आमे फुलफिल करिबा दैट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओके एंड यू नो दैट व्हाट आर द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट we need to use resources wisely we need to protect environment we need to meet the basic needs of all basic needs means जेमति खाद्य वस्त्र बासगृह ओके एमानन को आमे केमति एसबु को आमे केमति एन्श्योर करिबा पोर एंड मार्जिनलाइज सेक्शन को ओके इंटर जनरेशनल इक्विटी ओके आमे केमति इक्विटी को आमे एन्श्योर करि परिबा वेस्ट को रिड्यूस करिबा एंड प्रमोट करिबा रिसाइक्लिंग को okay so these are the some principles of sustainable development जहा कि हमें ज्योग्राफी रे ऑलरेडी डिस्कस करी छे and also with 8th क्लास रे में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषय डिस्कस करछे डिटेल्स दिबानी जस्ट मु गोटे ओवरऑल आईडिया दे दिली व्हाट डू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन क्लास 10th थ्रू द एग्जांपल नंबर 1 and एग्जांपल नंबर 2 व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट we know that resources को हमें टू कैटेगरी डिवाइड कर परिया one is non renewable resources one is रिन्यूएबल रिसोर्सेस ओके एंड जतबेले सस्टेनेबल डेवलपमेंट कथा आसे आमे सब बेले को रिन्यूएबल रिसोर्सेस को आमे अधिका यूज करिबा दरकार एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को आमे कम यूज करिबा एंड कंजर्व करिबा काहे कि बिकॉज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वंस एग्जॉस्ट होला परे ताको आमे रिक्रिएट रीजनरेट करि परिबा नाही बा जदी भी करिबा बहुत वर्ष लागिबो एंड दैट्स व्हाई आमे को रिसोर्सेस को हमें बहुत अधिका प्रायोरिटी देबा दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेस okay that is renewable resources and you know that groundwater is an example of a renewable resource okay what do you mean by renewable resource जदि ए रिसोर्स टी exhaust हे होचे then that can be replenished with the nature okay nature ताको replenish करि पारे से कैपेसिटी अछि का पाखरे नेचर पाखरे but this data that is example number 1 कोन कहूचे that is because of the over irrigation okay recent evidence suggests that groundwater is under serious threat overuse in many part of the country because of the overuse groundwater जे कि गोटे renewable resource जहा को कि हमें renew करि परिबा nature द्वारा ये replenish हे पारे किंतु तार overuse पाई ये भी serious stress बा serious threat अछि कि ना groundwater कौन कहा जाउची about 300 districts have has reported a water level declining 4 meter during the past 20 years in another 25 years 60% of the country would doing the same if the present way of using the resource continues so groundwater overuse is particularly found in that is western UP Punjab and Haryana also जो region रे हिच हमर कोन ना green revolution okay because of the advancement of एग्रीकल्चर बहुत जल आवश्यकता हुए बहुत इरिगेशन हुए एंड आमे ग्राउंड वाटर को बहुत अधिका ओवर यूज करछे ए स्टेट्स मानक रे दैट इज इन पंजाब देन वेस्टर्न यूपी एंड आल्सो इन हरियाणा एंड बिकॉज ऑफ द ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर कोन होची ना एग्जॉस्ट हेबारे लागिलानी सीरियस थ्रेट आमे देखिबा को पाउछे सो व्हाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज बुझी गला कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज यस विदाउट आमे ग्राउंड वाटर को यूज न करी आमे डिफरेंट अदर वे माध्यम रे भी तो आमे इरिगेशन करि परिबा ओके आमे रिवर वाटर को चैनलाइज करि परिबा ओके डिफरेंट अदर वेस अछि तो ए एग्जांपल रो आमे कोन देखिले जे आज पर्यंत आमे केवल डिस्कस करथले अबाउट
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस जो रिसोर्सेस को आमे रिन्यू करि परिबा नाही लाइक दैट इज द you know that crude oil, this is the example of non renewable resource. जदि crude oil रो हमरो स्टॉक सरी जाउची आको हमें नेचुरली रिप्लेनिश करि परिबानी. Okay, so when we are talking about the sustainable development, once upon a time we are only discussing about the non renewable resources and conservation of non renewable resources. But from these two examples, mostly from the example number 1, it is conclude that whether it is renewable or non-renewable resources, if we will not use the resources judiciously, what will happen? Now the resources will be in danger. Say non-renewable resources हो कि से renewable resource हो, like ground water example नेबा. से कोनोसी भी resource हो ना कहेंगे. जदि हमें judiciously use करूने, then future of our planet will be in danger. So that is the main motive of example number 1 and example number 2. एटा ग्राउंड वाटर एग्जांपल दिया जाए यह कहा जाउची जे रिन्यूएबल रिसोर्सेस भी एडजस्ट हे पारे जदि हम ताको ओवर यूज करिबा. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस तो हम पूर्व जानी छे दैट कैन नॉट बी रिप्लेस. हम सेति पई कहूचे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को हमको कंजर्व करिबा दरकार फ्यूचर जनरेशन पई. बट ए डिस्कशन रो यह जना गला ए बोथ एग्जांपल रो आमे यह शिक्षा पाइले सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करिया पई हेले बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को हमको बहुत जुडिशियसली यूज करिवार अछि. एमती नो जे आमे केवल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को आमे कंजर्व करिबा एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेस को आमे मन इच्छा व्यवहार करिबा. नो, we have to use all the resources judiciously to attain sustainable development. That is the main idea behind this example number 1 and 2. And at last, again I am telling you, this is all about the sustainable development, and we have already discussed about the sustainable development. What do you mean by sustainable development? Now we need to meet the needs of the present but without compromising the ability of future generation to meet their own needs. फ्यूचर जनरेशन भी जमते तांकर नीड को फुलफिल करि परिबे ताको ध्यान रे रखी जदि हमें प्रेजेंट जनरेशन को नीड को फुलफिल करि पाउचे हमें डेवलप करि पाउचे देन ओनली वी कैन अटेन द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एंड दिस आर द principles of sustainable development. So this is all about your first chapter of class 10th economics, that is development, and I hope कि chapter टी आपन को बहुत भल लागि थिबो एंड बुझी पारथिबे. जदि ए वीडियोस गुडी का आपन को भल लागुची देन निहाती लाइक करंतु, कमेंट करंतु एंड फ्रेंड्स मानक सहित शेयर भी करंतु. एंड नेक्स्ट सेशन रे आमे डिस्कस करिबा 100 MCQs. लागुनी चैप्टर 100 MCQs हबो, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कलेक्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी पार्ट जेंदे आमे MCQs आमे कलेक्ट करि परिबा सो दैट MCQs डिस्कशन सह हमर चैप्टर सब कॉन्सेप्ट पे हमर रिवाइज हे जिवो एंड हमर MCQs पे प्रैक्टिस हे जिवो डिफरेंट टाइप्स ऑफ MCQs जहा कि हमको क्लास 10th बोर्ड एग्जाम रे गोटे कॉन्फिडेंट तब एग्जाम को फेस करिया पे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस सेशन. थैंक यू फॉर वाचिंग.